Hi everybody, welcome to Learner's Oasis. Today I'll be discussing about the medicine administration part 2, parental route of medicine administration, that is the injections. I hope all of you have gone through the part 1, that is the oral route of administration. You can subscribe my channel to review medicine administration part 1 and other topics posted earlier. And also you can get notifications of my further videos in future. Okay, let us start the injections, administration of injections. So, welcome to the class about administration of injections. So, first we will be discussing about the types of injections, that is, injections as per route. First one is intradermal. These injections are given into the intradermal layer of skin. Next is hypodermal or subcutaneous route. It is given into the subcutaneous tissue. Next is intramuscular. These injections are given into the muscle layer, muscular layer. Next is intrathecal. These are given into the spinal canal or into the subarachnoid space so that it will reach the spinal into the cerebrospinal fluid. Then intraperitoneal. These injections are given into the peritoneal cavity. Next is intraosseous. It is given into the uh, bones. Intravenous or intra-arterial. Intravenous injections are given into the vein and intra-arterial into an artery. Then infusions. Infusions are just like injections but large quantities of fluid. If you want to inject the whole 500 or 1000 ml fluid into the body, it is called infusions, not injections. Next is transfusion. When you are injecting blood or blood products, it is called transfusions. For example, blood transfusion, plasma transfusion, etc. So these are the types of injections as per a rule. We'll go to the purpose of injections. Why injections are given? Rapid and systemic effect of the drug. To get a rapid and systemic effect, injections are given. Second is to provide effect when the patient is unconscious. जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है उसको भी इंजेक्शन देना पड़ेगा because he cannot swallow the drug. Then complete absorption. The drug which is given through injection, it is usually absorbed completely rather than a oral route. Oral route से जो मेडिसिन देते हैं उससे ज़्यादा absorption होता है इंजेक्शन में because वो जो है डायरेक्टली ब्लड में चले जाता है या डायरेक्टली into the body it is injected. It is more absorbable. So complete absorption takes place. Then when not suitable for oral administration, for poor absorption from GIT, toxic or irritating to GIT. जब oral route सूट नहीं कर रहा है या फिर poor absorption है GIT से absorb पूरा नहीं हो रहा है properly नहीं हो रहा है या फिर toxic effects ज़्यादा है oral route से और जो gastrointestinal tract है उसको irritate कर रहा है drug ऐसे condition में injections are given. Then to get local effects. Local effect के लिए भी injections दिया जाता है जैसे कि anesthetic drugs. कुछ local anesthesia के लिए local जो देते हैं that is anesthetic drugs एक particular area में देते हैं. So that is for the local effect. Then to restore blood volume. ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए भी इंजेक्शंस या इन्फ्यूशंस दिया जाता है यूजुअली फ्लूइड्स देने से ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर हो सकता है जैसे डिहाइड्रेशन हो गया पेशेंट को फ्लूइड बहुत कम है बॉडी में ऐसे कंडीशन में फ्लूइड्स इन्फ्यूज किया जाता है देन टू गिव नरिशमेंट रेयरली इन सम केसेस नरिशमेंट भी इन्फ्यूशंस के थ्रू दे सकते हैं
Now the complications of injections. Injections से कुछ complications हो सकते हैं जैसे कि allergic reactions, infections at injection site. Injections जहाँ दे रहे हैं वहाँ पे infections हो सकता है अगर hygienic practice follow नहीं किया तो. Pyogenic reactions. Pyogenic means performing reactions हो सकते हैं injection site में. Then tissue trauma. Tissue को trauma है needle अंदर जो है इंसर्ट करने के टाइम में टिश्यू ट्रॉमा होता है. देन साइकिक ट्रॉमा, पेशेंट जो है डर सकता है जैसे छोटे बच्चे हैं वो इंजेक्शन नीडल देख के वो डर जाता है, दैट इज ए सॉर्ट ऑफ साइकिक ट्रॉमा. देन पेन होता है जब इंजेक्शन अंदर डाल के इंजेक्शन स्पेशली आईएम इंजेक्शन जब देते हैं पेन तो जरूर होती है. देन एक्सीडेंटल इंट्रावास्कुलर इंजेक्शन, आप आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं एक्सीडेंटली अगर वो वेन को या आर्टरी को पियर्स करके वो इंट्रावास्कुलर भी हो सकता है. देन फुट ड्रॉप, परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स. फुट ड्रॉप या परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है अगर नर्व में इंजेक्ट किया गया आपका साइट सही सेलेक्ट नहीं किया गया तो नर्व इंजरी हो सकता है, दैट कैन कॉज पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब. देन एयर एम्बोलिज्म, एयर अगर इन स्पेशली इन्फ्यूशन फ्लूइड इन्फ्यूशन के टाइम में अगर एयर एंट्री हो गया तो that can cause air embolism. Overdose और underdose, drugs properly measure नहीं किया तो overdose भी हो सकता है, underdose भी हो सकता है. The mistake by mistake. Then circulatory overload, बहुत ज़्यादा fluid दिया तो circulatory overload हो सकता है. Infection due to lack of aseptic technique, proper aseptic technique maintain नहीं किया तो infections हो सकता है. Now we'll see the safety measures to be followed. Check the drug 3 times, that is 3 checks while taking the drug from the cupboard. You have to check. Then while taking it to the patient tray, जो मेडिसिन कंटेनर से पेशेंट का ट्रे में जब ट्रांसफर करते हैं मेडिसिन को उस टाइम में दोबारा चेक करने मेडिसिन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं. उसके बाद जब while replacing the कंटेनर अलमीरा में दोबारा रिप्लेस करने के टाइम में एक बार और चेक करने हैं ताकि दिस इज द सेम मेडिसिन विच इज सपोज टू बी गिवन. सो इसी तरह 3 बार चेक करना है मेडिसिन लेने के टाइम में ताकि आप जो राइट मेडिसिन जो है वही आप इंश्योर करेंगे you have taken the right medicine. Next is follow 10 rights of medicine administration. 10 rights of medicine administration part 1 में बताया हुआ है, just go through it. Then aseptic technique should be maintained during the procedure. इंजेक्शन देने के टाइम स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है, अदरवाइज इन्फेक्शन हो जाएगी. Then proper knowledge regarding action, side effects and other aspects of drug. ड्रग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, इसका एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, बाकी क्या उससे क्या रिएक्शंस हो सकता है, ये सब सारे उसका एक्शन क्या, सारी चीज़ें पता होना चाहिए मेडिसिन देने के पहले. Efficiency and confidence. The nurse should be efficient enough to give injections and she should show considerable amount of confidence within herself. That the patient should be psychologically comfortable. So these are the safety measures. Now the preparation of giving injections. Following preparation should be done to give injection. That is, first one is selection of appropriate syringe size and type. Appropriate size का syringe लेना है और उसका type of syringe भी सही होना चाहिए, इंजेक्शन देने के पहले ही करना है, प्रिपेयर करके रखना है. Then needle size and type. Proper needle size and type होना चाहिए, type of needle होना चाहिए. Then forms of medication. जो form लिखा गया वही form ही select करना है, form of medication. Then preparation of trolley और ट्रे फॉर इंजेक्शन देने के लिए ट्रे या ट्रॉली प्रिपेयर करनी है. देन सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर इंजेक्शन, प्रॉपर साइट सेलेक्ट करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है. सो प्रिपरेशन है दैट शुड बी डन. प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड एनवायरनमेंट.
पेशेंट एंड उसका एनवायरनमेंट को भी प्रिपेयर करना है, जैसे पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को बताना है कौन सी मेडिसिन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या इफेक्ट है इसका, ये बताना है। देन पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है, प्राइवेसी देना है, एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। द मेडिसिन शुड बी केप्ट इन ए clean environment and given accordingly. Now we'll see the parts of a syringe. In the picture you can see a loaded syringe, and there is the syringe has a barrel, tip and plunger. You can see it here, and the needle has a this you can see the needle attached to the syringe at the tip. The hub of the needle is connected. It is a syringe with the needle. Here again there is a syringe and needle in separately. It is kept here so that you can see the parts. Syringe has a tip. It has a, after the tip, the part behind is called barrel, and inside the barrel there is a plunger. Then the needle has the tip of the needle is called bevel, and there is under that you can see the needle, and the hub of needle, the part which is connecting into the tip is called hub of the needle. There are different types of syringes. In this picture you can see a tuberculin syringe and insulin syringe. In the insulin syringe it is marked in units, not ml. Okay, it is up to 50 units. You can give up to 50 units of insulin by this with this syringe. And the tuberculin syringe is a 1 ml syringe. You can see the markings on the syringe. It is a narrow 1 ml syringe. In this picture also you can see different types of syringes according to the amount of drug injected. You can use different these syringes like 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, and even 50 ml syringes are available. So these are the different types of syringes according to the size. Now we'll see the types of needles. Needles are mainly differentiated based on the length and diameter of the needle. Length range from half inch to 3 inches, and diameter ranges from 7 gauge to 33 gauge. As the needle gauge gets bigger, the needle's diameter gets smaller. जैसे gauge बड़ा होते जाएंगे, diameter उसका छोटा होते रहेगा. You can see in the picture from 18 gauge to 26 gauges of needles are given in different colors. Gauge selection is based on the concentration of medication given. How much medication you are giving accordingly. Then body size and age of an individual. Mobility status of the patient. Required absorption rate for medication. Long needles are used for intramuscular medications and short needles for subcutaneous medications. Here you'll see the selection of needles and syringes. Intradermal injections, 1 ml syringes are used, which is 0.01 ml units calibration. And needles, 26 or 27 gauge needles are suitable here, which has a length of 3 by 8 or 5 by 8 inch. Then subcutaneous injections, 1 ml syringes are used, which is calibrated in 40 or 80 units for insulin, and 2 to 3 ml syringes calibrated in 0.1 ml for other injections. Needle size is 25 gauge, half to 5 by 8 inch length is suitable here. Then IM injection, 2 ml and 5 ml syringes calibrated in 0.2 ml. And needles are 21, 22 and 23 gauge width needles with 1 to 2 inches length. Then IV injection. Size depends upon the amount of fluid to be injected. Still 18 gauge to 21 gauge needles are used here,
which has a length of 1 to 2 inches. Next is about the medication order. In order to give an injection, you should have a medication order from the doctor. So what all things should be there in the medication order? Physician's order should have these four essential parts. That is, patient's full name should be written in the order. Then date and time of injection. Drug name should be written clearly. Dosage, how much drug should be given, and route of administration, time and frequency of administration, and signature of the physician. These are very essential parts that should be a must in a physician's order. Then types of medicine orders. Which are the types of orders? Standing order, first one that should be carried out for a specific period of time until and unless another order cancels it. So standing order क्या होता है? Already वो order बना चुका है, it is standing and it is carried out for a specific period. जब तक नया order नहीं आता ये order आप follow कर सकते हैं. Next is PRN order, guidelines to give medicines when needed. जब भी ज़रूरत है उस टाइम में मेडिसिन देने के लिए PRN order देता है. Then one time order or single order. Written order administered only once. For example, preoperative medication. So एक बार के लिए लिखा जाता है ये मेडिसिन ऑर्डर और एक बार दिया तो फिर वो ऑर्डर का वैल्यू खत्म हो गया. जैसे कि प्रीऑपरेटिव मेडिकेशन एक ही बार दिया जाता है. Then stat order. It is an order to give medicine immediately and only once. ये stat order जो है तुरंत देना है और एक ही बार देना है. एग्जाम्पल है इंजेक्शन लासिक्स 20 mg IV स्टार्ट. वो इंजेक्शन लासिक्स 20 mg तुरंत दे देते उसके बाद उसका वैल्यू नहीं है वो दोबारा नहीं देना. देन टेलीफोन फैक्स और वर्बल ऑर्डर्स. जब डॉक्टर द ऑर्डर गिवन बाय डॉक्टर टेलीफोनिकली आफ्टर डिस्कशन ऑफ द केस शुड बी written by the nurse on physician's order sheet which is designated as TO. The physician's physician must countersign within a specific period of time, usually 24 hours. So जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वार्ड में हॉस्पिटल में तो उसको टेलीफोनिकली पेशेंट का कंडीशन बताया जाता है. उसके बाद डॉक्टर जो है तुरंत देने वाला मेडिसिन जो है टेलीफोनिकली ऑर्डर कर सकता है. सो उसका फिजिशियन का ऑर्डर में जो नर्स वो डिस्कशन कर रहे हैं शी शुड राइट टी ऑर्डर टेलीफोनिक ऑर्डर और उसको जो भी ऑर्डर बताया जाता है उसमें लिखना है और नेक्स्ट डे 24 आवर्स के अंदर ये जो फिजिशियन ने ऑर्डर किया उससे काउंटर साइन करवाना है वो जो मेडिसिन ऑर्डर में. देन फैक्स ऑर्डर्स are also considered the same way as the telephonic. फैक्स से भी अगर ऑर्डर आ रहे थे इसे सेम वे जैसे टेलीफोनिक ऑर्डर को डील किया सेम वे यू हैव टू मैनेज इट. नेक्स्ट इज द सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स मेजर करने के लिए कई तरीके हैं कई सिस्टम हैं. सो द मेन 3 systems I am going to say is metric system. Metric units are used in this system. Milligram, gram, milliliter, liter, etc. are metric system. Then household system. Household system that include spoon, teaspoon, drops, cups, etc. Then apothecary system. It is the older system. The basic unit of weight is in this system is grain or gr, and basic unit of volume is the minim. Now there are some factors affecting the injections. ब्लड सप्लाई टू द एरिया. अच्छे ब्लड सप्लाई तो जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है. कॉम्पोजिशन ऑफ द फ्लूइड इंजेक्टेड. क्या कॉम्पोजिशन है फ्लूइड का इसके हिसाब से जो अब्सॉर्प्शन है वो अफेक्ट करता है. देन एप्लीकेशन ऑफ हीट. हीट अप्लाई करने से जल्दी वासोडाइलेशन होता है वो एरिया में सो अब्सॉर्प्शन इज मोर. देन मसाज स्टिमुलेट्स लोकल ब्लड सप्लाई. एक इंजेक्शन देने आईएम इंजेक्शन देने के बाद वो एरिया मसाज किया तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और इससे जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है. सर्कुलेशन टाइम ऑफ द ब्लड एडिमा शोक एक्सेट्रा डिक्रीजेस अब्जॉर्प्शन. सर्कुलेशन टाइम ब्लड सर्कुलेट करने में कितने टाइम लगाता है. अगर लंबे टाइम ले रहा है एडिमा वगैरह में ब्लड सर्कुलेशन मुश्किल हो जाती है उस कंडीशन में अब्सॉर्प्शन कम हो जाती है. तो जल्दी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो जल्दी अब्सॉर्प्शन हो जाएगी. देन फिजिकल कंडीशंस.
Local diseases like skin infections, local lesions, inflammations etc. decrease the absorption. अगर कोई infections है, कोई lesions है skin में, तो वो area से absorb थोड़ा delay हो जाती है. Addition to of substances to break down the skin lessens the absorption. Uh, any substances which are added which will cause skin breakdown, that will lessen the absorption. Now, complications of injections, allergic reactions, uh, infections, pyogenic reactions, tissue trauma, psychic trauma, pain, accidental intravascular injection, ये सारे complications हैं injections के. We will continue with the complications of injections. Foot drop, persistent paralysis of the limb if there is nerve injury, errors in administration of medication. Administration में अगर सारे rights follow नहीं किया तो errors हो सकता है. Then air embolism due to introduction of air into the blood vessels. Air embolism हो सकता है, overdose or underdose of medication, circulatory overload, transmission of infections like serum hepatitis, AIDS, etc. Now, nurse's responsibility in giving injections. Check the following: diagnosis and age of the patient. You have to check what is the diagnosis of the patient and what is his age. Purpose of injection. क्यों injection दे रहे हैं ये check करनी है. Physician's order proper है कि नहीं ये देखना है. Client's name, bed number and other identification. Nurse's record. Nurse's record mainly last dose कब दिया था, उसमें कोई problem तो नहीं हुआ ये देखना है. Any symptoms of allergic reactions, overdose, etc. We will continue with the nurse's responsibility. Necessity for giving test dose. अगर test dose देने की medicine है तो उसको test dose देनी है. Form medication available. किस form में medication available है. Consciousness of the patient. Then check where the last dose was given. Any redness, pain, induration, itching, skin lesions, sloughing, abscess formation, etc. Report if any. Any side effects, complication वगैरह हुआ कि नहीं. Skin में कोई problem है कि नहीं ये check करनी है और report करनी है. Then client's previous experience with injections. Client का previous experience क्या है injection के साथ ये भी आप पता लगाना है. Principles of medicine administration. This was explained in oral administration also. The three checks it is already told in last slides. Then 10 rights: right patient, right drug, right dose, right route, right time, right reason, right documentation, right evaluation, right information or client education, and right to refuse. Now comes the preparation of articles. A tray containing a syringe and needle, dry and wet swab or spirit swab, kidney tray and paperware, medication, whether it is an ampule or vial form, whatever it is. Then file to cut ampules, medication card, gloves if infectious case. Intravascular injection sites, we will see which are the sites. And before that, identify the client, explain the procedure to the patient, provide privacy, restrain the client if the client is a child, avoid meal timings, keep the attention of the client away from injection, place the patient in comfortable position, select suitable site. Now the IM injection sites. You can see the picture. Two ways of selecting the site is given. Two sites are selected here. Injection site. First injection site is dorsogluteal site. Dorsogluteal site is selected by keeping the taking the upper and outer quadrant of the buttocks. If buttocks is divided into 4 regions by imaginary lines. If you divide the buttocks into 4 equal regions, the upper and outer quadrant is selected for injection, for IM injections. So in this picture, in this first picture A, the site is given in light green color, that is upper and outer quadrant of the buttocks. The next, that is dorsogluteal site.
Then ventrogluteal site. How to select the ventrogluteal site? Place the tip of index finger on anterior superior iliac spine. Anterior superior iliac spine में index finger रखना है. So somewhat here is the finger, that is the anterior superior iliac spine, and middle finger is kept just below the iliac crest. This is the iliac crest. The middle finger is placed just below the iliac crest, and the V-shaped area formed between the index finger and the middle finger is given in light green color. That is the that area, V-shaped area between these fingers, is the site to give injection. That is the ventrogluteal site. Next site for IM injection is the mid thigh. That is vastus lateralis muscle is there, somewhat at the middle of the thigh. So how to select the site? Located on mediolateral aspect of the thigh. Select the mediolateral aspect of the thigh. It is the area between the middle anterior thigh and middle lateral thigh. If you make an imaginary line between middle anterior thigh and middle lateral thigh, the area between these two is the site for vastus lateralis muscle injection, that is the mid thigh. The site is marked here in blue, and on the either side it is marked the vastus lateralis site. You can see the picture. I'll show this is the area for injection, and here this is the area, both the thighs. Next IM injection site is the mid-deltoid muscle. Select the lower edge of the acromion process, 3 finger breadth, that is 3 to 5 centimeter below the acromion process, and just at the middle of the deltoid muscle is the site. So this is the acromion process here. This is acromion process. Just below the acromion process, 3 finger breadth, that is 3 to 5 centimeter below the acromion process. This is the site, somewhat at the middle of the deltoid muscle. That is the site for IM injection on the upper arm. Next is the subcutaneous injection sites. The picture shows the sites for subcutaneous injection. The lateral aspect of the arm, you can see here, this is the lateral aspect of the arm. Then anterior and lateral aspect of the thigh, this is the anterior and lateral aspect of the thigh. And the umbilical region, this is umbilical region, and the back, usually below the scapula, this is at the back just below the scapula, and lower loins, these are the lower loins. So these are the areas for subcutaneous injections. Next is the intradermal injection sites. Intradermal injection sites are delivered into the dermis. The intradermal injections are delivered into the dermis or the skin layer underneath the epidermis. So the skin, it is given into the dermal layer, that is just under the epidermis into the dermal layer. The sites are given in this picture. You can see the sites in dotted in the dots. You can see the sites. The upper aspect of the chest. This is the upper aspect of the chest. Then the upper aspect of the back. You can see this is the upper aspect of the back, and lateral aspect of the upper arm. This is the lateral aspect of the upper arm, and inner aspect of the arm. This is the inner aspect of the
arm. You can see these are the injection sites for intradermal injections. You can see the technique of giving intradermal injection. The needle is kept just in 15-degree angle. The syringe is kept here. This is the dermal layer, epidermis. This is the epidermis and this is the dermis. Just into the epidermis, the injection is given, and there is a wheal or bleb formed here, like this. In this, on the skin, you can see this is called a wheal or a bleb. So this is the way of giving intradermal injection. Now, for giving injections, for different injections, the position of the needle, the angle of the needle and the skin, between the needle and the skin will be different. For intramuscular injection, the angle is 90-degree angle. You can see here, this is 90-degree angle. Intramuscular injection. Then subcutaneous injection, the angle is somewhat 45-degree angle. You will be giving the subcutaneous injections you are giving in a with an angle of 45-degree, and intravenous injections, it is given at an angle of 25-degree, little more down, and the intradermal injections are given at a degree of 15-degree angle. It is somewhat parallel to the skin. You can see here, this is 15-degree angle. So these are the angles formed while giving different injections. Now, the procedure of giving injections: select the medication, select the right medication, uh, just like uh, the explanation given earlier. Select it by checking the medication, and wash your hands, prepare medication, recheck the order दोबारा check करनी है. Take the solvent in syringe and introduce into the vial after cleaning and opening the lid. जो वायल में है तो उसका ऊपर से एक लिड होगा, उसको ओपन करके रबर उसका क्या रबर कॉर्क होगा. सो दैट इज इसको उसके अंदर जो सॉल्वेंट है उसको नीडल में सिरिंज में विड्रॉ करके उसमें इंट्रोड्यूस करना है बोतल के अंदर, एंड इट शुड बी विड्रॉ द मिक्स सोल्यूशन. इसको थोड़ा सा रोटेट करके रोटेटरी मूवमेंट से उसको डिसॉल्व करना. उसके बाद विड्रॉ द मिक्स सोल्यूशन टू द सिरिंजेस. इसको सिरिंज में, अगर इंजेक्शन वो आम्ब्यूल में है तो आम्ब्यूल को ब्रेक करने के तरीका यहाँ दिखाया हुआ है. आम्ब्यूल का ऊपर अगर नेक के ऊपर अगर इंजेक्शन है तो उसको थोड़ा सा टैप करके नीचे लाना. उसके बाद एक कॉटन से पकड़ के उसका नेक जो है बड़ा स्लोली उसको क्या कहते हैं ब्रेक करनी है. ब्रेक द आम्ब्यूल जनरली विथ गोस पीस अराउंड द नेक ऑफ द आम्ब्यूल. लोड इट इनटू द सिरिंज. उसके बाद उसको सिरिंज में लोड करनी है. कीप द मेडिकेशन इन द स्टेराइल ट्रे एंड कवर इट. स्टेराइल ट्रे में रख के उसको कवर करके रखना है. Check the order in the medicine card and compare it with the label of the medication. medicine card और label medicine के label को compare करके देखना है ताकि medicine right medicine लिया हुआ है देखने. In multi-dose will reconstitute the label with the identifying data, client's name, dosage, strength, date and time and signature of the nurse who prepared it. अगर मल्टी डोज फाइल है तो बाकी जो इंजेक्शन है उसमें सारे डिटेल्स होना चाहिए, नेम, डोसेज, स्ट्रेंथ, डेट एंड टाइम वगैरह लिख के उसको रिप्लेस करना है. रिप्लेस द मेडिकेशन टू द प्रॉपर प्लेस, कैरी मेडिकेशन टू द क्लाइंट. ये मेडिसिन लोड करने के बाद ट्रे में रख के उसको पेशेंट के पास लेके जाना है. We'll continue with the procedure of giving injections. Identify the patient once you reach up to the bedside with medications.
So for identifying, the following techniques can be used. Check the bed number of the patient. Call the patient by name in a questioning manner. Ask the client to repeat the name. Ask someone who knows the patient. Check the medication order. Medication order दोबारा check करनी है. Keep the medication at a clean area. A clean area medications रखनी है. See the patient is comfortable position and relaxed. Patient comfortable position में होना चाहिए और relaxed होना चाहिए. After doing all these preparations, inject the medication. IM injection. For IM injection, spread the thumb and forefinger to make the skin taut. Skin को थोड़ा taut करके पकड़ना है. Needle is inserted at 90-degree angle, holding syringe in the right hand, using a steady push on the needle. एक steady push करके 90-degree angle में needle muscle में enter करना है. Slightly aspirate the needle to see if there is blood, and if no blood comes, then inject the medicine slowly by pushing the piston. नीडल इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा बैक पुश बैक करके देखना है, ब्लड तो नहीं आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है तो इंजेक्शन पुश करके देना है, स्लोली पुश करना है ताकि मेडिसिन जो पेन जो है कम हो जाए. रिमूव द नीडल क्विकली एंड मसाज द साइड फॉर क्विक अब्सॉर्प्शन. इंजेक्शन एक बार मेडिसिन इंजेक्ट हो गया तो नीडल क्विकली रिमूव करनी है और जो एरिया है उसको कॉटन से दबा के थोड़ा प्रेस करके मसाज करने ताकि मेडिसिन जल्दी absorb. Next is this is a picture of giving intradermal injections. For subcutaneous injections also should be given in the same way with a subcutaneous needle. Insert the needle in 45-degree angle. For intradermal injections, care should be taken to keep the needle up to the dermis layer and form a bleb or wheel at the site. इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए नीडल जो है 15-degree एंगल में पकड़ना है एंड वो इंट्राडर्मल डर्मल लेयर से नीचे नहीं जाना चाहिए, डर्मिस में ही इंजेक्शन देना है. इंजेक्शन देने के बाद एक व्हील फॉर्म होगा, ये आपको नोट करना है whether there is a bleb or wheel form. Now comes the aftercare of the articles and the client. Ask the patient to move the limbs to check if any nerve injury. Patient को थोड़ा से हाथ या पैर जहाँ इंजेक्शन दिया उसको थोड़ा मूव करके मार्क करने के लिए बोलना ताकि कोई नर्व इंजरी तो नहीं है. Watch for signs and symptoms. Allergic reaction, कोई allergic reaction तो नहीं है, इसका signs and symptoms चेक करनी है. Hot application if pain, need redness or induration at the site. अगर इंजेक्शन साइट में रेडनेस, इंड्यूरेशन या पेन है तो हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं. देन कीप द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन. पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है या बैठाना है जहाँ जैसे पेशेंट चाहे. देन डिस्कार्ड द आर्टिकल्स एज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जैसे करने हैं उसी तरह उसका आर्टिकल्स रिकॉर्ड करने डिस्कार्ड करने हैं. नीडल शुड बी डिस्ट्रॉयड विद नीडल कटर एंड डिस्पोज्ड ऑफ. नीडल कटर में नीडल कट करके डिस्पोज करनी है. clean dry and replace the reusable articles. जैसे किडनी ट्रे वगैरह है जो reusable उसको clean करके dry करके अलमीरा में वापस करनी है. Then wash your hands. Then record the procedure record करनी है, उसमें name of the medicine, strength, given amount, date and time, effect, any side effects, any allergic reactions should be marked in letters, capital letters with red ink. So मेडिसिन का नेम और जो रोड डेट एंड टाइम वगैरह लिख के अगर कोई मेडिसिन नहीं लिया तो वो भी लिखना है पेशेंट. देन एनी साइड इफेक्ट्स हो तो वो भी लिखना है उसके साथ. एलर्जिक रिएक्शन है तो एलर्जिक रिएक्शन शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स विथ रेड इंक ताकि सबको दिखाई दे और उसके बाद उसमें साइन करनी है. So that is a recording of the procedure. So to conclude the topic, we have discussed about the injections, types of injections, precautions, nurse's responsibility, preparation of articles, patient and environment, selection of injection sites, checking the side effects, technique of giving injections and aftercare.
of the articles and the patient. So that's end of the. So thank you very much for listening.